Hello my lovely ladies, I am back again here with an amazing tutorial. So today I'm going to be doing a beautiful brown smoky eye and ये जो look है ना ये बिल्कुल ही ऑफिस पार्टी वगैरह हो या कुछ ऐसा डे टाइम वाला पार्टी हो उसके लिए ना बिल्कुल ही परफेक्ट है. So without any further ado we will start the tutorial. Alright, at first we will moisturize our face, which I have already done. I think that is so important because if you will moisturize your face तो वो जो है ना आपके चेहरे को एक बहुत ही अच्छा कैनवस प्रोवाइड करता है. एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बिकॉज अब थोड़ी गर्मी आ गई है ना तो ऑब्वियसली वी नीड आवर बेस टू stay properly, so for that I'm using that. So for priming our face I will be using this Smashbox primer, which is my absolute favorite, and yeah, we will warm it up on our hands and उसके बाद जो भी मेरे एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयली होते हैं उस पर अच्छे से लगाना है प्राइमर को. एंड यू नो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो होते हैं उसको लगाने के लिए यू हैव टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा अगर लग जाता है ढंग से नहीं लगता है देन इट बॉल्स अप एंड उसके बाद फाउंडेशन काफ़ी ख़राब लगने लगता है. एंड ऑब्वियसली परफेक्ट की फॉर योर मेकअप इज़ ब्लेंडिंग. आप जितना ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. एंड ये जो मेरा नोज़ एरिया है एंड दीज laugh lines, of course, these bothers me a lot whenever I apply foundation, no matter how much I prime. यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए always avoid heavy base. Even in my bridals I tend to avoid heavy base. I don't really like having you know that cakey look. मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. That's why I don't really go for a lot heavy base. I will apply this under my eyes as well because I've got fine lines over there. For foundation I am using Anastasia's one. This is in the shade 330W, which is a little bit fair, but no worries, we will mix some darker shade and we'll make it work because this shade is expensive, you know. Well, honestly it's not that fair. ये कैमरे पर लग रहा है but after a while ये काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाता है. एंड फिर ऑब्वियसली वी विल ब्रॉन्ज आवर फेस एंड एवरीथिंग, तो सब सही हो जाएगा. दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस फाउंडेशन. मैंने काफ़ी दिन पहले ही लिया था बट आई हैवंट यूज्ड इट एंड सो फार सो गुड. आई रियली लाइक द कवरेज. Obviously I have to blend this a little more. So I'll take a buffing brush and I will blend everything. This brush literally works like magic. If you are used to using brushes like me and you don't want to use a lot of sponges, then I think this is your go-to product. You see, ऑलमोस्ट सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो बिल्कुल ही चले गए, which is good. We will wait for this base to oxidize a little. Not forget your neck, babies. Do not forget, because face अलग है neck अलग, it looks so bad. I think now my foundation is an okay match. I won't say this is amazing, but yeah, मतलब सही है. I think oxidize वगैरह करके and overall it's gonna look good. I'm just hoping कि मैं grey ना लगूँ. So now we will see if this can hide my dark circles as well. I really like the coverage of this foundation, you know. This is a beautiful foundation and as you have seen already in the video, I haven't applied any corrector which I normally do because I have intense dark circle and काफ़ी अच्छे से मतलब हाइड किया है. Wow, love it. Though this is little expensive, but I think it's totally worth it. So now with the help of this K Beauty loose powder, we will quickly set our under eyes. Setting your under eyes
is so important, because if you will not do it now, then your base is going to crease like crazy. आप में से बहुत सारे लोगों की ये होती शिकायत, मतलब मुझे मैसेज वगैरह करके पूछते हैं कि मेरा जो बेस है वो क्रैक हो जाता है, क्रीज हो जाता है. फर्स्ट, एक तो कभी ऐसा होता है कि यू अप्लाई अ लॉट ऑफ बेस, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सेकेंडली, सेट नहीं करते बहुत लोग अच्छे से बेस को. एक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर या फिर इनफैक्ट कॉम्पैक्ट एज वेल, बट अगर हेवी सेटिंग करनी है देन आई विल ऑलवेज रिकमेंड ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. Right now I'm using this K Beauty one, and I think this is amazing. I crease on my smile line like a lot. Oh my god. If I am in a long function, मुझे तो हर 2 घंटे पर टचअप करना पड़ता है, बिकॉज नो मैटर हाउ मच आई सेट. अभी जो नेचुरल लाइन्स इसको तो आप पुश नहीं कर सकते ना. इफ़ यू विल स्माइल और इफ़ यू मूव योर माउथ टू मच देन होगा ही. एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, आई कांट कंट्रोल. सो अब जो है सो है. आई एम अवेयर ऑफ माई प्रॉब्लम्स, सो या आई नो हाउ टू सेट दैट. I don't really think that I will be applying any concealer, because I don't think I need one. Do I need one? No. So for doing my eyeshadow, I'm using this beautiful palette by James Charles Morphe, and you know, इसमें colors जो है ना, if you see the color scheme, you will go crazy. See, कोई ऐसा color नहीं है जो इस palette में नहीं मिलने वाला है. This is literally the size of a laptop. Oh my god, I love this palette so much. हाँ, इसमें थोड़ा फॉल आउट वगैरह होता है, बट ठीक है, we can make that work. This is a beautiful palette. No wonder इसमें थोड़ा सा फॉल आउट होता है, but if you see the color story, man, look at the pigment, so amazing. This is literally my most used palette. By the way, I'm using a brown shade which is from this palette in my crease area at first, and now I'm using a burnt orange shade because मुझे एक beautiful transition चाहिए, and you have to blend it nicely. It should look beautiful, and I'm using this precise brush क्योंकि इससे ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है. एंड ये जो होता है ना, बिल्कुल आप हल्का हल्का अगर ऐसे ब्लेंड करते हो तो इट इज़ वेरी यूजफुल इन दैट. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दिस डार्क ब्राउन कलर विच ऑलमोस्ट looks black, but it isn't. It is not pure black color. You can see I am not keeping this shade above my crease lines, or else you will make your eyes panda eyes, not the glamorous one. And now again we will take this brush and we will try to blend it nicely. The gradation has to be smooth, okay? Without any base, this is looking so nice. Now we will take lighter beige color and we will highlight our inner corner. We don't have to apply black eyes, or else you know बिल्कुल पांडा eyes जैसा लगने लगता है, सारा आई मेकअप बर्बाद हो जाता है. Now I'll take the same brown eyeshadow and I will slowly and carefully apply this in the lower lash line. You have to be very precise because this can make or break your look. Alright, तो अब आई मेकअप ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. Obviously we will apply false eyelashes and I'm gonna water tight line my waterline as well. अभी क्या करना है? I will do my eyebrows, of course, with the help of a spoolie brush at first.
I will comb my eyebrows to make sure कि इसके अंदर जो भी फाउंडेशन वगैरह है सब के सब बिल्कुल निकल जाए, because you know what happens whenever you apply your base, वो फाउंडेशन जो होता है वो आपके आईब्रोज में फंस जाता है and it looks so bad. So you have to make sure कि आईब्रो करने से पहले एकदम बिल्कुल क्लीन बेस होना चाहिए. And for eyebrows I'm using this amazing eyebrow palette from PAC. ये ना बिल्कुल मेरा favorite है. Oops, I dropped my brush. Sorry, I'm messy. I will use the dark brown shade from this and I will shape my eyebrows. I know a lot of you are into feathery brows and all, but I have tried it. मेरे ऊपर ना बहुत ही बकवास लगता है. मैं दूसरों का कर देती हूँ if my clients demand for that. So it's absolutely fine. But whenever I have tried that, oh my god, it looks pathetic on me. So I don't think it's my cup of tea. Yeah, but the harsh line is, so I'll use my finger to blend it out. And you see, even this cut of mine is not visible. I like my brows to be sharp, अभी फ़िलहाल तो मेरी लाइकिंग यही है, so that's why I do it. और मेरा जो आईब्रो है इसकी लेंथ एक साइड से थोड़ी शॉर्ट है. I will elongate this as well. You see the difference? Time to contour my face, and for that I'm using this K Beauty one, and this is my absolute favorite. अभी जब से उसको यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, I haven't stopped using this. बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कॉन्टोर करते टाइम बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करते हैं. You should not do in this direction, कॉन्टोर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है एंड देन वो यहाँ पर आते आते मिडल ऑफ द चीक में वो फेड करता चला जाता है. So do not do that, that is a huge mistake. And make sure to blend your contour nicely. I haven't even applied any highlighter or anything, and this foundation is so glowy. Very nice. Make this jawline go away with the contour, baby. ये सब सारी जो हमने आइसक्रीम वगैरह पिज़्ज़ा ये सब जो खाया है ये सब हमें छुपा देना है. I do not contour my forehead because okay चलो थोड़ा कर लेते हैं just for the sake of it, but I don't think I really need it. My forehead is already okay size. जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है ना, but there you really don't need to do that extra step because सब कोई करते हैं. Okay. And now it's time for blush, and for blush I'm using this sugar one, again my favorite. We will apply this here just above the contour. Do not apply it here or else ना face बहुत ही ज़्यादा वो गोलू मोलू सा लगने लगता है. बट हाँ ऑब्वियसली अगर किसी का फेस लॉन्ग है, मेरा तो ऑलरेडी है, सो आई डोंट रियली नीड दैट. बट अगर किसी का है देन दे कैन यूज दैट टेक्निक. फॉर मी आई डोंट थिंक आई रियली नीड दैट बिकॉज माई फेस इज प्रिटी ओके, इट्स क्वाइट बैलेंस्ड, सो आई डोंट नीड दैट. एंड आई रियली लाइक अ chiseled look on me. And for highlighter I will use this Maybelline Master Chrome Gold, and oh my god, though this is a drugstore highlighter, but the pigmentation is amazing. Like, look at that. Wow. हाथ में ऐसे लगा लिया तो obviously I'm gonna use it. I will not waste it. Oh baby, love it. The only concern with this highlighter is this is
too golden, and since I'm almost I'm like proper medium complexion, so for me it works really good. बट वो फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों पर ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. इसका एक अलग शेड है which is almost has a pink undertone. सही है वो भी, बट आई थिंक आई लाइक दिस वन बेटर. यू नो आई रियली बिलीव कि कुछ शैम्पेन कलर का अगर मेबेलिन कोई हाइलाइटर लाए इसी रेंज में, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट सेल आउट. यू नो आई थिंक आई शुड हाईलाइट माई इनर कॉर्नर एज वेल. Oh my god, you see the difference? Beautiful. We will highlight our eyebrows as well. If you want, you can obviously use matte eyeshadows as well, but I love a good highlighter moment, so I will do that. It's very tough for me to stay away from highlighter, very tough. So for my lips I will use this lipstick from Maybelline. I will link down the shade below, and this is a beautiful nude color. Is so gorgeous. I really love these Maybelline lipsticks, you know, because ये जो होता है ना ये almost 24 hour last करता है. I'm not even kidding you, like seriously. Even if I you know give my bridals high-end makeup, I use these lipsticks only because of the staying power. मतलब the formula is so comfortable on the lips, you will not feel any dryness or anything. So amazing, love it. अभी तक मुझे ना इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड ये बिल्कुल मैट भी नहीं लगता है. क्रीम फिनिश दिखता है बट ऑब्वियसली दिस इज मैट. इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, बट उसके बाद ना दिस लुक्स अमेजिंग. एंड नाउ सिंस आई हैवंट टाइट लाइन्ड माई आईज, आई विल यूज दिस K Beauty kajal, which is my absolute favorite. So nice, extremely pigmented, smudge proof and whatnot. Now time for mascara. We just have to apply a little because any which ways I will be applying false eyelashes. So yeah, I'm shooting this tutorial in the middle of the night and I've got nowhere to go. Alright guys, so मैंने ना lashes off camera लगाए थे and I am really feeling this look. This is looking so amazing. मैंने ना काफ़ी दिनों से थोड़ा वो जो brownish blackish type smoky eyes जो है वो नहीं किया था. I don't know why I never do it. I'm always into cut creases and all of that. So I've told you that this is going to be a brown eyeshadow look, but this is almost like black eyeshadow and I don't mind that. This is looking so nice. Oh my god. I'm again looking myself in the viewfinder of my camera because I can't stop admiring my eye makeup. Love it. So I hope that you guys have enjoyed this tutorial and I will see you guys in the next video. Till then, take care, and if you recreate this look then make sure to tag me on my Instagram handle. Everything is linked down below, and जो भी products वगैरह थे वो सबके description भी मैंने नीचे डाल रखे हैं. So yeah, check that out. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.